and surprisingly the stars have nothing to say about it. Like, wow, really? I mean, you are speaking about women's rights, then अब क्या हुआ? अब क्यों चुप हो आप लोग? अब तो बोलो, अब क्या बोलोगे इसको लेके? क्यों चुप हो? राइट्स कहा गया अब? हेलो एवरीवन, दिस इज एमिली। क्या हाल है? सो गाइस, कल जो कुछ भी हुआ एंड कंगना जी के साथ बहुत ही बुरा हुआ एंड इट्स जस्ट सो नॉट राइट। गाइस, जो कुछ भी हो, जितने भी दिले शिकवे क्यों ना हो आपके साथ, आपका राइवलरी जो भी है उनके साथ, किसी के किसी के काम के जगह पे जाके ऐसे डिस्ट्रॉय कर देना जो किया गया है yesterday, and this is so not right. This is so unjust. It's like devastating जो उन लोगों ने किया, and on what grounds? Illegal construction. Really? अगर ये सही है गाइज, अगर ये सच में सही है तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन बहुत सारे इलीगल काम होते हैं एंड जिसके लिए एक्शंस नहीं लिए जाते। Just because she put up her voice against nepotism, just because she took the privilege or the support of noise publicity to bring down nepotism and the nepo kids, this is what she gets in return. And also she was fighting for justice of Sushant Singh Rajput, and this is what she gets in return. Wow, bravo guys। अगर आप कुछ बना नहीं सकते तो अगर कोई और बनाता है कुछ चीज़ को बहुत मेहनत से, तो उनके लिए खुश होना सीखो एंड लाइक ट्राई टू बी हैप्पी। गाइज, पीपल आर टॉकिंग अबाउट women's rights, people are talking about patriarchy, they are saying how inappropriately the cameras are touching Riya Chakravarti. Okay, but none of the stars have anything to say about what just happened with Kangna ji and how her office was taken down and on simply like literally like I don't know, whatever, like I don't like accept this reason क्योंकि till 30th of September the whole government thing is closed। लेकिन ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, I don't really know, and surprisingly the stars have nothing to say about it. Like, wow, really? I mean, you are speaking about women's rights, then अब क्या हुआ? अब क्यों चुप हो आप लोग? अब तो बोलो, अब क्या बोलोगे इसको लेके? क्यों चुप हो? राइट्स कहा गया अब? सच बताओ तो ना गाइज, मतलब विक्टिम कार्ड जो होता है खेलना बहुत ही आसान होता है, लेकिन इट्स women like Kangna Ranaut who has the balls, who have the guts to speak the truth, who has the like guts to utter the truth and the ugly truth, and this is what she gets in return and what not। क्या क्या नहीं बोला गया उनको, say it like she was told a witch, she was like उनको चुड़ैल कहा गया, एंड अब तो उनका घर, उनका ऑफिस, घर कम ऑफिस जो है वो भी मतलब तोड़ दिया गया, एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स? इलीगल कंस्ट्रक्शन। वाओ, ग्रेट। उससे मैं ये सुना हूँ, आई जस्ट couldn't accept it and that's why I'm making this video। and guys, to my TFG fam, I just request you guys, to all my subscribers out there, just please support Kangna ji। It's a request from my side, and I just really can't explain to you like how bad I feel for her, and it's it's just not right। ये जो हुआ है, it's so not right। हम लोगों का पता नहीं कौन सच है कौन गलत है, लेकिन किसी के काम की जगह पे जाके उसको तोड़ देना ये सही नहीं है। दिस इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। सो कल जब मैं घर आई from work, and when I listened to this whole incident of Kangna ji, I was devastated। Like, when Urmidi told me this, I was like, simply I was devastated first of all, and I was like, what just happened? What did she say? Like, are you being serious at the moment? Like, and I was like, yeah, मतलब एक जो ये प्रॉपर्टी है, ये मतलब इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है गाइज, एंड बहुत 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 ज़्यादा मेहनत के बाद ऐसा कोई प्रॉपर्टी पोजेस कर सकता है। एंड जब वो मतलब
टूट जाता है ना, बहुत ही ख़राब लगता है. एंड आई जस्ट प्रे टू गॉड दैट यू नो give more power to her and she wins in the end. So yeah, I mean, that's what. And I just hope she wins, and I just hope that she wins in the end. And yeah, so that's what I felt about this whole incident, and that's what I want to share basically. And yeah, so guys, agar आप आप मेरे साथ सहमत है इस पूरे इंसिडेंट को लेके, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो इफ़ यू अग्री विथ मी. सो या, एंड वन मोर थिंग इज़ दैट LAC इंडिया चाइना फेस ऑफ चल रहा है अभी गाइज, एंड आई जस्ट विश टू गॉड भगवान प्लीज़ 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 स्टे विथ आवर सोल्जर्स एंड just make them strong and just like let them survive. And yeah, I mean, बहुत ही ख़राब चीज़ चल रहा है अभी. I just don't want to talk about politics and all, and like I have like I I don't want to put my views, but I just wish and I just pray to God ki to to keep all our Jawans in a safer side. So yeah, and that's what I wanted to say. So that's what guys. And honestly मैं बता रहा हूँ, like still now I just can't accept that this has happened. This is so unfortunate. And कल रात को हुई और एक न्यूज़ सुनने को मिला कि the reporters are been arrested. The reporters have been arrested and because of some grounds. So obviously we know on what grounds and stuff. So that's really like trash, and that's really like shitty kind of a thing that's going on abhi. And I don't know, like God, like what's going on? What's going on? Like why is this going on? क्यों हो रहा है? क्यों चल रहा है? सच में ये समझ में नहीं आ रहा. Like okay, okay. So yeah, I mean, what's going to happen? So पता नहीं, लेकिन I just wish that everything goes well, and more power to Kangana ji and more power to our Jawans. So yeah, this is Ameeruja, that fat girl. Bye. Jai Hind.